Hello friends, welcome to Ameta Chemistry. In this video, we are going to discuss some previous year questions which were asked in CSIR net, especially from inorganic chemistry. So let's start the discussion of some previous. Okay, so first question is the Nephalauxetic parameters beta is highest for. It was asked in CSIR net December 2016. So to solve these questions, first we have to understand what is nephelauxetic parameter beta. So this parameter beta can be calculated with the formula like this. This is B dash by B, and what is beta dash and what is B? These are Rekha parameter. Rekha parameter in complex, for complex, and this is again Rekha parameter for free metal. Okay, so we have to understand Rekha parameter. What is the Rekha parameter? Rekha parameters tells or it tells the minimization of DD inter electronic repulsion. Minimization of DD interelectronic repulsions by orbital expansion. Okay, so Rekha parameter is depend on nephelauxetic effect. And what is the nephelauxetic effect? Nephelauxetic effect is minimization of DD interelectronic repulsion by orbital expansions, and जो energy होती है that is measured by Rekha parameter for this minimization. Okay, for example, this is d orbital. So in orbitals के में जो electrons है इनके बीच में there is the interelectronic DD interelectronic repulsion. इनके बीच में क्या होता है? Repulsion होता है. Okay, so beta D is Rekha parameter in complex, means it is DD DD electronic repulsion in complex, we can say, and this B is DD repulsion, electronic repulsion in free metal. Okay, so and this is the nephelauxetic parameter, or it can also be said like nephelauxetic ratio, NR. Okay, now we have to find out कि इनमें से चार ऑप्शन में से किसके लिए the beta will be highest, right? So beta is beta dash B dash by B, यानी कि जो DD electronic repulsion हो रहा है complex में and the DD electronic repulsion in free metal, इन दोनों का जो ratio है that is nephelauxetic ratio or nephelauxetic parameter. So now इस case में what can we say? If B dash is increased, then ultimately or automatically beta will also be increased. So now we have to find out कि इन चारों species में से in which species DD electronic repulsion is maximum, right? So उस maximum repulsion को समझने के लिए we have to understand the nephelauxetic effect. अपने को इफेक्ट समझना पड़ेगा. अब इफेक्ट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल दिस इज डी इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल्स. ओके, तो ये डी ऑर्बिटल्स, इनमें इलेक्ट्रॉन से इनके बीच में क्या हो रहा है? रिपल्शन हो रहा है. ओके, इनके बीच में हो रहा है
रिपल्शन। अब जो ये रिपल्शन कब मिनिमाइज होगा, जब कोई लिगेंड आता है, फॉर एग्जांपल कोई एक्स लिगेंड आ रहा है, तो एक्स लिगेंड की केस में क्या होगा, एक्स लिगेंड के पास भी अपना न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस क्या करेगा, इन ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, एंड ड्यू टू दिस अट्रैक्शन बिटवीन मेटल ऑर्बिटल्स एंड लिगेंड न्यूक्लियस, ये जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होते हैं, थोड़े एक्सपेंड हो जाते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, और बड़े होने की वजह से क्या होता है, ये लिगेंड के ऑर्बिटल्स में, सपोज ये लिगेंड है, इसके ऑर्बिटल के अंदर इंटरमिक्स हो जाते हैं, आपस में ये मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होने की वजह से इसके अंदर क्या बन जाता है, कोवेलेंट करेक्टर आ जाता है। क्लियर, ये बात है नेफ्लोक्सेटिक इफेक्ट की। तो नेफ्लोक्सेटिक इफेक्ट तो ये हो गया। नाउ डीडी रिपल्शन अपने को फाइंड आउट करना कि किसमें ज्यादा होगा, तो जिसमें नेफ्लोक्सेटिक इफेक्ट कम होगा उसी में नेफ्लो दिस डीडी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होगा। क्यों, बिकॉज नेफ्लोक्सेटिक इफेक्ट क्या होता है, मिनिमाइजेशन ऑफ डीडी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बाय ऑर्बिटल एक्सपेंशन। ओके, तो इनमें से किसमें नेफ्लोक्सेटिक इफेक्ट बहुत ही कम होगा, वो देखना है अपने को, फाइंड आउट करना है। वो कब कम होगा, जब डीडी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा। डीडी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कब ज्यादा होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल के अंदर ही रहेंगे एंड ऑर्बिटल विल नॉट बी एक्सपेंड, राइट। सो अपने को पता है कि जो फ्लोराइड है, दिस फ्लोराइड, ये फ्लोराइड क्या है, स्मॉलेस्ट, स्मॉलर इन साइज है, स्मॉलर इन साइज है। तो स्मॉलर इन साइज की वजह से क्या हुआ, इसका न्यूक्लियर अट्रैक्शन टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, इसी के इलेक्ट्रॉन है ना, टूवर्ड्स इसके इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, बहुत ज्यादा हुआ, हाई हुआ। अब हाई होने की वजह से क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को, ऑर्बिटल्स को एक्सपेंड नहीं होने दे पाएगा, क्योंकि ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है विल बी अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस ऑफ इटसेल्फ, इसके न्यूक्लियस से ही अट्रैक्ट रहेंगे, तो वो क्या होंगे, दे विल नॉट बी एक्सपेंड, वो एक्सपेंड नहीं होंगे। अगर वो एक्सपेंड नहीं हुए तो उनमें डीडी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, डीडी इलेक्ट्रॉन आपस पास में ही रहेंगे, एंड डीडी इलेक्ट्रॉन पास में रहने की वजह से क्या होगा कि देयर वुड बी मैक्सिमम डीडी रिपल्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सब पास में, तो आपस में रिपल्शन भी ज्यादा होगा। तो दैट्स व्हाई इसमें सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा। ब्रोमाइड और क्लोराइड, इनकी साइज एज कम्पेयर टू फ्लोराइड, इन तीनों की साइज एज कम्पेयर टू फ्लोराइड ज्यादा है, सो दैट्स व्हाई वहां पे मिनिमम, इस कंपेयर में फ्लोराइड के कंपोनेंट में नेफ्लोक्सेटिक इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। और नेफ्लोक्सेटिक इफेक्ट अगर ज्यादा है तो बीटा क्या होता है, नेफ्लोक्सेटिक रेशियो क्या होगा, मिन कम हो जाएगा। सो दैट अनदर थिंग यू कैन remember, that nephelauxetic effect is inversely proportional to beta. Beta means this is nephelauxetic ratio. Okay, और अगर नेफ्लोक्सेटिक की एक सीरीज भी होती है, अपन उसको भी वी कैन रिमेम्बर लाइक फ्लोराइड, इसमें बीटा सबसे ज्यादा, देन H2O, देन अमोनिया, then oxalic acid, then bromide, sorry, chloride, then cyanide, then bromide, and then iodide. Means fluoride में beta value is highest and iodine में beta value is lowest. So fourth option is the right option for this question. Now second question, the 2EG means the transition is from 4A to G2 to E and G. Okay, for chromium, pentaamine, hexaamine 3 plus, right? So we have to find out that for this transition, the electronic spectrum occurs nearly at any, at which wavelength the electronic spectra will be
occur for this transition, right? So transition अपन को directly अपन we can see that the transition is from 4A to G2 to EG, means to A to G can be ground state for this complex, right? So how can we find out it? For example, chromium 3 plus. So chromium 3 plus, it has D3 configuration. D3 configuration means 1, 2, and sorry 3. So plus 2 plus 1 and 0, it means capital L value is 3. It means it is F term. Okay, and F term is split into 3 terms, degenerate levels like A to G, then C2G, then T1G. Okay, so ground state is A to G. Now, if we draw the Orgel diagram for D3 configuration, so it would be, this is the F term, right? This is line, this is A to Z, this is okay. So ये Orgel diagram देखें अपन F term का means the D3 configuration. So it is A to G, this is T2G, and this is T1G. Okay, this is, but spin multiplicity is we have we have to write the spin multiplicity also. So for D3 configuration, spin multiplicity is 2s plus 1. And what is the s? S is n by 2. And what is the n? N is number of unpaired electrons. So there are 3 unpaired electrons. Okay, so 3 by 2 plus 1. So it would be 2 into 3 by 2 plus 1. So 3 plus 1 is equal to 4. The spin multiplicity is 4. But in the question, the transition is given from 4 spin multiplicity to 2 spin multiplicity, 2 spin multiplicity. It means it is very less and very low energy. It will have very low energy. And if it is have low energy, then its wavelength will be high. Wavelength will be high. So just we have to find which is the maximum wavelength in given options. So A is the highest lambda max. Okay, so that's why for fifth question the answer will be 650 nanometer. So let's start or let's discuss next question that was asked in examination of CSIR net June 2016. And in this question, it is asked that the number of microstates present in 3F term. So we have to find out the microstates for 3F term. Okay. So अगर कोई भी given term हो and we have to ask we are asked to calculate the microstat. So for such kind of given term, the formula is 2s plus 1 into 2s minus 2l plus 1. Okay, so 2s plus 1 into 2l plus 1. So what is the 2s plus 1? और given term अपने को पता है जो ऊपर term होता है upper subscript में, that is 2s plus 1. So it is 3 into 4f. What is the value of l? So we know that s, it has 0, p, it has 1, d, it has 2, and for f it is 3. So l value is 3 for f. So 2 into 3 plus 1. Okay, so 3 into 7, it would be 21. So this second option is the right option for the question 6. And अगर आपको टर्म ऐसा नहीं दिया हुआ, कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ, फॉर एग्जांपल की P3, ओके, एंड पूछा गया है कि माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करो. So for such kind of questions or such kind of terms, we have to calculate microstats by using the formula like n factorial
factorial by r factorial bracket n factorial minus n minus r bracket close factorial. ओके, सो ये फॉर्मूला अपने को यूज करना होता है अगर ऐसा कुछ दिया। फॉर एग्जांपल P3 है, सो P3 व्हाट इज द n फॉर P3? P3 मींस n मींस मैक्सिमम नंबर फॉर गिवन और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर गिवन ऑर्बिटल। सो p ऑर्बिटल दिया हुआ मैक्सिमम नंबर कितना होता है? 6, तो 6 फैक्टोरियल अपन लगाएंगे। ओके, डिवाइड बाय r factorial means how many electrons are there for given. So there are 3 electrons, so that's why 3 factorial. Okay, and n minus r, n is 6, r means 3, so 6 minus 3 bracket close or factorial. Now we have to solve it. So how can we solve it? 5 4 3 2 1 divide by 3 2 1, 6 minus 3 is equal to 3, so 3 2 1. So 3 2 1 to 3 2 1 cancel, 3 2 6 2 times, 2 to 2 down, and 5 into 4. So that's why for P3 the microstates would be 20. So with this way we can calculate the microstates for electronic system as well as for term system. अगर term दी हुई हो तो 2s plus 1 into 2l plus 1. अगर electronic system है then n factorial by r factorial into n minus r factorial. What is the n? N is the maximum number of electrons can be occupied that orbital, given orbital. And what is r? How many electrons are given at present time. So with this way we can calculate the microstats. So I hope you will like this video. So please like and subscribe the channel. Thank you very much for watching this video.